गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम विषय लेके आए हैं शिपिंग से रिलेटेड, वो आरपीएसएल से रिलेटेड है। आरपीएसएल रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस। आरपीएसएल क्यों ज़रूरत है और सीफेरर को मैं रिकमेंड करता हूँ टू प्लीज़ ज्वाइन द वेसल और ज्वाइन द कंपनी विच हैव आरपीएसएल लाइसेंस। आरपीएसएल लाइसेंस क्यों ज़रूरी है? अगर आप कहीं जहाज़ पे जाते हैं और आपका सी सर्विस काउंट नहीं होता है तो आपके ज्वाइन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सीडीसी पे स्टैम्प होते हुए भी आप आगे के एग्ज़ाम के लिए नहीं जा सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है? रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट लाइसेंस। आरपीएसएल लाइसेंस जो है ये जो है आपको कहीं भी अनवांटेड और अनऑथराइज कंपनी के पास जाने के लिए मना करता है। मतलब कि अगर आप किसी कंपनी के बिना आरपीएसएल की कंपनी के आप बाहर जा रहे हैं तो आपका इमिग्रेशन क्लियर नहीं होगा। दूसरा चीज़ क्या है कि चलिए अब इस सब्जेक्ट के बारे में आपको बताएंगे कि आरपीएसएल क्या है। क्या इंडियन ऑनरशिप कंपनी जो है, जिनके अपने वेसल हैं, वो ऑनर है, उनको आरपीएसएल की ज़रूरत है क्या? इंडियन ऑनरशिप कंपनी जो खुद के जहाज़ को मैनिंग कर रहे हैं उनको आरपीएसएल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो उनको डीजी शिपिंग से स्पेशल परमिशन मिलता है और उनको स्पेशल आईडी एंड पासवर्ड मिलता है, जिसके थ्रू वो अपने सीफेरर जो अपने जहाज़ पे प्लेस करते हैं उनका आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट ऑनलाइन करते हैं, जिससे उस सीफेरर का सी सर्विस काउंट होता है और वो सीफेरर आगे के परीक्षा के लिए और आगे के पोस्ट के लिए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ ट्राई टू गेट द इंफॉर्मेशन बिफोर ज्वाइनिंग एनी कंपनी और एनी माइनिंग कंपनी और ऑनरशिप कंपनी इफ़ दे हैव already I have told कि there is no requirement of RPSL license for Indian ownership company placing candidates on board, but RPSL license is required to have all mining company which mans the or which supply manpower to any other owner in the world. So please be careful, be careful, be careful. Please think three times to join a company, a mining company which has not RPSL valid license, or the company which is blacklisted from DG Shipping of India. So it is better to think not to join those companies which are blacklisted or they don't have RPSL license. So let's see friends, what is RPSL license, what are all the criteria required to get the RPSL license, and for in RPSL license renewal procedure there is a checklist where the company needs to comply the rules and regulations of DG Shipping to get the renewal of or a new RPSL license. So let's have a look. I have made some details about RPSL license. आइए आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, ये है रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस, आरपीएस लाइसेंस। आरपीएसएल नंबर इज एन अल्फा न्यूमेरिक यूनिक लाइसेंस नंबर issued by the DG Shipping to all the registered crew agencies that are authorized to recruit seafarers. Recruitment and placement service license is issued by the Directorate General of Shipping under the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India,
RPSL license is granted for 5 years. Thereafter, it can be renewed every 5 years. The validity of the RPSL license is subject to the successful completion of an inspection that has to be undertaken every year by the government approved auditors. In 2016, the Government of India, through its notification, made it mandatory to all the seafarers recruitment companies to obtain an RPA license for employing seafarer on owned vessel or recruiting for principal vessels. No seafarers from India are allowed to get employed on merchant vessels through unregistered manning agent. Sea time experience will not be considered for any examinations conducted by DG Shipping if any seafarers joins vessel through any non-registered mining agencies. जो मैंने ही बताया आपको कि आपका सी सर्विस काउंट नहीं होगा अगर आप कोई आरपीएसएल कंपनी के थ्रू ज्वाइन नहीं करते हैं तो. It is mandatory for crewing agencies in India to obtain an RPSL license in order to place seafarers on Indian flag vessels or foreign flag vessels. Foreign flag vessels can only hire Indian seamen through a registered RPSL company. Foreign ship owners cannot directly employ Indian seafarers on their vessel. It would be necessary for the ship owner to engage a duly licensed agency to recruit Indian crew. If a seafarer is hired directly by a ship owner, his or her immigration won't be cleared at the airport. Ship owners are mandated by the Indian law to recruit Indian seafarers only through the registered RPSL companies. Thus, any Indian seafarers wishing to get employed on merchant ships must approach registered RPSL companies jobs placement. Currently, there are more than 1,000 or 500 registered crewing agencies in India. Indian ship owners, मैंने बताया था आपको, देखिए Indian ship owners with Indian flag vessels are not required to obtain an RPSL license. However, they must obtain a separate approval from DG Shipping to place seafarer on their own vessel. However, placing seafarers on the other vessels, whether foreign or Indian, requires an RPSL license. चलिए देखते हैं what are the requirements to apply for an RPSL license. What are the requirements to apply for an RPSL license? First, applicant must have registered company based in India. Applicant must have at least one Indian director in the company. Applicants must have marine background. Form 7. Applicant must have adequate office space and office must be in a commercial building. What is the procedure to obtain RPS license in India? Documents. Organize all the required documents if the applicant meets all the prerequisites for the RPSL license. An application filling. An application is filled with the relevant documents and application company details. Inspection. Upon successful submission of application, an inspection is carried out at the office by the approved auditor who verifies and submitted the details, scrutinizes the documents and interviews the company's employee to assess if company is capable of managing seafarers recruitment. If the inspection is found to be in compliance with the rule, the auditor provides a recommendation to issue an RPSL license, or else they may recommend rejecting the application.
approval. Upon receiving the audit report from the auditor, government officers review the entire application and the company is informed if any deficiencies are observed in the application to rectify the same before issuing the RPSL license. What are the documents required to apply RPSL license? First, complete registration document, incorporation certificate, MOA, AOA and PAN card, business office address proof, manning agency agreement, bank guarantee. What is the bank guarantee for RPSL license? बैंक गारंटी इज ए गारंटी इफ द कंपनी, अगर कोई कंपनी जो है वो करप्ट हो जाती है, बैंक करप्ट हो जाती है और उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, या किसी वेसल पे कुछ हो जाता है किसी सीफेरर को और जो कंपनी जो है बैंक करप्ट हो जाती है, उस केस में शिपिंग ऑफ इंडिया, डीजी शिपिंग ऑफ इंडिया पैसा कहाँ से देगा भाई सीफेरर को? तो उसके लिए एक बैंक गारंटी लिया जाता है। अगर आप एक साल में 0 से 50 सीफेरर प्लेस कर रहे हैं जहाज पे, तो आपको मिनिमम 10 लाख, ऐसे 15 to 250, 51 to 250, 15 लाख, ये जो है लिमिट है। इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आप साल में अगर जहाज पे प्लेस करते हैं तो आपको बैंक गारंटी के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डीजी शिपिंग के पास इतना पैसा रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो है RPSL लाइसेंस इश्यू होगा। तो बैंक गारंटी वो पैसा है कि अगर कोई कंपनी किसी वेसल पे किसी कैंडिडेट को, किसी सीफेरर को कुछ हो जाता है और कंपनी जो है बैंक करप्ट हो जाती है, तो उस केस में डीजी शिपिंग इंडिया जो पैसे का यूज करता है वो बैंक गारंटी है और बैंक गारंटी होती है। तो चलिए, ये तो हमने देखा कि RPSL क्या होता है, RPSL लाइसेंस को कैसे अप्लाई किया जाता है और RPSL लाइसेंस अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि अगर आपके पास RPSL लाइसेंस है और आप उसको रिन्यू कराना चाहते हैं, इंस्पेक्शन कराना चाहते हैं, तो RPSL लाइसेंस का क्या रिक्वायरमेंट है, आपको मिनिमम फुलफिल करना पड़ता है। ये देखिए, हम देख रहे हैं चेकलिस्ट फॉर इंस्पेक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस। यहाँ ऊपर में लिखना है नेम ऑफ रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट सर्विस, लाइसेंस नंबर, नंबर ऑफ सीफेरर एम्प्लॉयड प्रेजेंटली इन अ ईयर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डेट ऑफ इंस्पेक्शन, लोकेशन, नेम ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन, डेजिग्नेटेड कॉन्टैक्ट पर्सन। उसके बाद है कि डिटेल्स ऑफ इंस्पेक्शन टीम, आपके टीम में कितने लोग हैं और टीम लीडर और उनका नाम और सिग्नेचर। उसके बाद आइए ये पढ़ना, यही चीज़ है जिसके बारे में आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। आइए, ये है ऑपरेशनल स्टैंडर्ड कंपनी का उतना होना ही चाहिए जितना कि ये चेकलिस्ट में दिया हुआ है। 3.1 में देख रहे हैं कि इज द एड्रेस गिवन इन द लाइसेंस और एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस सेम एज द करेंट एड्रेस और प्लेस ऑफ बिजनेस। तो जब इंस्पेक्शन करने आते हैं तो वो देखते हैं कि जो एप्लीकेशन में कंपनी का एड्रेस मेंशन किया हुआ है और जहाँ पे इसका इंस्पेक्शन हो रहा है वो सेम है कि नहीं, येस और नो करना होता है। इज अ कंपनी ऑफ RPS लाइसेंस ग्रांटेड अंडर द रूल्स परमानेंटली डिस्प्लेड एट द प्रीमाइस ऑफ RPSL इन प्लेस एक्सेसिबल टू द पब्लिक। RPSL लाइसेंस जो है आपको अपने दफ्तर के बाहर, दफ्तर में जैसे आप एंट्री करते हैं सीफेरर, वहाँ बाहर में ही लगाना रहता है कि RPSL नंबर सो एंड वैलिडिटी इज सो एंड सो। इज एडिक्वेट रिसोर्सेज एंड ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल फॉर द RPSL टू प्रोवाइड द सर्विस। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चेक किया जाएगा कि आपके पास एडिक्वेट रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप सीफेरर को बैठने के लिए और सीफेरर का रिक्रूटमेंट आप कर सकते हैं। डज द सर्विस प्रोवाइडर फॉर रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट ऑफ सीफेरर मेंटेन ऑन अप टू डेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल सीफेरर रिक्रूटेड और प्लेस थ्रू इट। तो आपको ऑल साइन ऑफ का आपको रिपोर्ट पहले ही सबमिट करना रहता है और आप अपने पास भी रखेंगे शो करने के लिए। Does the service provider for recruitment and placement of seafarer ensure that its management and staff are adequately trained and have relevant knowledge of
the maritime industry or extent of duties assigned to them in this concept. अब उसमें है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड इंटर रिलेशन ऑफ ऑल द पर्सनल वर्किंग विद आरपीएस हु मैनेज परफॉर्म ए वेरी वर्क ऑफ डिफाइंड वेरीफाई द वर्क ऑफ डिफाइंड। फॉर्म 6 जमा होता है पर्सनल इनफॉर्म वेरीफाई स्टेटमेंट एंड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट पर्सनल इन फॉर्म 6, उसमें डिफाइन होता है, वहाँ पे आपको डालना पड़ता है। द सर्विस प्रोवाइडर फॉर रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट ऑफ सीफेयर इंश्योर दैट सीफेयर रिक्रूटमेंट और recruited or placed by it are informed their rights and duties under their employment of agreement prior to or in the process of their engagement, at that proper arrangements are made for such seafarer to examine their employment agreement before and after they are signed on, and also that they are provided with copies of the said agreement. अब देखिए, सीफेयर जो भी ज्वाइन कर रहे हैं उनको ज्वाइनिंग से पहले सीफेयर एम्प्लॉयमेंट ऑफ एग्रीमेंट देना है और उनको पढ़ने के लिए टाइम देना है। तो ऐसा देते हैं तो, और उसकी एक कॉपी भी उनको देना है ज्वाइनिंग से पहले। और ज्वाइनिंग से पहले आप सीफेयर को उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ को बताने हैं, उनका क्या राइट्स है, उनका क्या ड्यूटीज़ है अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एग्रीमेंट। उसके बाद आइए, डज द सर्विस प्रोवाइडर फॉर रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट ऑफ सीफेयर इंश्योर दैट सीफेयर रिक्रूटेड और प्लेस्ड बाय देम आर qualified and hold the document necessary for the jobs concerned, and the seafarer employment agreement are in accordance with applicable flag state laws, regulations and any collective bargaining agreement that forms part of their employment agreement। आपको अपना चेकलिस्ट शो करना है कि आपके जहाज पे ज्वाइनिंग के पहले इस सीफेयर का क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है और वो मीट कर रहा है कि नहीं। Does the RPS provider ensure that the ship owner has the means to protect such seafarer from being a standard abandoned in a port, provision for the repatriation of a standard abandoned seafarer along with his maintenance and required emergency medical assistance prior to repatriation and transportation of the mortal remains of a seafarer in the event of his death। पढ़ना है आपको, एससीए में ये मेंशन किया जाता है। इज देयर अ बैंक गारंटी वैलिड, बैंक गारंटी वैलिड है, ये भी आरपीएसएल में दिखा रहा है। Does the RPS service provider have a procedure to examine property and adequately and respond to any complaint concerning its activities? Inform the Director General about any unreasonable complaint। आपके पास एक कंप्लेंट बॉक्स भी होना चाहिए और आपके पास कंप्लेंट प्रोसीजर होना चाहिए, इनफैक्ट जहाज पे और आपके ऑफिस में। Is there an established system to protection by the way of bank guarantee to compensate seafarer for any monetary loss that may incur as a result of failure by RPS and the relevant sea of owner? बैंक गारंटी से रिलेटेड है। Is there a procedure or policy to ensure that no means or mechanism of list are used to prevent or deter seafarer for gaining an employment which they are qualified? मतलब सीफेयर से कोई भी नोट द रिक्रूटमेंट शुड बी carried out without any discriminatory policy basis of race, color, sex, religion, political opinion। और ये आपके पास एक प्रोसीजर होना चाहिए। आपके एसएमएस में आता है कि हम जो किसी भी सीफेयर को एम्प्लॉय करते हैं वो उनके कॉम्पिटेंसी के आधार पे करते हैं, न कि उनके कलर के आधार पे, सेक्स के मेल फीमेल या फिर उनके रेस या कलर के आधार पे या नेशनल या पॉलिटिकल ओपिनियन के आधार पे एम्प्लॉय करते हैं। Does the RPS service provider have a document policy stating that no fees or other charges in borne directly or indirectly in the whole or in part by the seafarer other than the cost to the seafarer in obtaining medical certificates, seafarer book
एंड पासपोर्ट और अदर सिमिलर ट्रैवल डॉक्यूमेंट। देखिए ये चीज़ लिखा जाना चाहिए, जैसे आप ऑफिस में एंट्री करते हैं वहीं पे कि वी डू नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम द सीफेरर और फी फॉर सर्विस, फी फॉर द सीफेरर फॉर एम्प्लॉइंग दे ओनली। अगर उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है तो पासपोर्ट के लिए आप भी ले सकते हैं पैसा, या फिर मेडिकल के लिए आप चार्ज कर सकते हैं, बाकी आप किसी चीज़ के लिए चार्ज नहीं कर सकते हैं। Does the RPS service provider have a document policy stating that an accident or casualty on board causing injury or that disappearance, loss overboard or homicide by of an Indian national is reported to Director General at the earliest? ये आपके पास होना चाहिए। Note, not later than 48 hours of receipt of such information, next of kin also be informed immediately at the time at the same time। 48 आवर मैक्सिमम आपको एक ऑप्शन दिया गया है, उसके पहले आपको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग और नेक्स्ट ऑफ कीन को बताना है एनी लॉस होता है या फिर मोटल होता है, जहाज पे डेथ और डिसेबिलिटी होती है, कोई भी इंजरी होता है तो भी। The RPS service provider have a procedure to develop and maintain operational practices to verify the seafarer medical examination, identity document and such other items as may be required for the seafarer to gain employment. Does the RPS service provider have a document policy to maintain with the due regard to the right, privacy and need to protect confidentially full and complete records data of the seafarer conveyed by their system? सीफेरर का कोई भी डेटा लीक नहीं होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इसके लिए कोई सिस्टम है क्या आपके पास? डज द आरपीएस सर्विस प्रोवाइडर मेंटेन अप टू डेट लिस्ट ऑफ शिप्स owned by the ship owners which RPS providers are ensure there are reasonable means by which ships can contacted in emergency at all hour। आपके पास RPSL ओनर के RPSL सर्विस प्रोवाइडर के पास ये मेंटेन होना चाहिए अप टू डेट लिस्ट ऑफ शिप्स, जितना शिप वो माइनिंग कर रहे हैं उनका लिस्ट, ऑन बाय द शिप ओनर्स और विच RPSL सीफेरर, अगर इमरजेंसी में भी उनको कांटेक्ट करने के लिए एट ऑल आवर्स कम कर सकते हैं। डज द RPS हैव अ डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी प्रोसीजर इन प्लेस स्टेटिंग दैट seafarers will not be subjected to exploitation by their personnel with regard to offer engagement of particular ships by the particular companies? Does the RPS have a documented policy procedure in place to prevent the opportunity for examination exploitations of seafarer arising from or issue of joining advance or any other financial transaction between ship owners and seafarers by handled by RPS? Does the RPS clearly publish cost, if any, which seafarer is expected to bear in the recruitment procedure? ठीक है। Does the RPS have a documented policy procedure in place to ensure that the seafarer are informed of any particular condition applicable to their job for which they are to be engaged and the particular ship's owners policies relating to their employment? Does the RPS have a documented policy in place to ensure that the procedures followed by which dealing with the case of incompetence or indiscipline are consistent with the principle of natural justice, the law of the land and practice with CBA? Does the RPS have a documented policy procedure in place to ensure that all mandatory checklists and documents submitted for employment are up to date and have not been fraudulently obtained and employment reference are verified? Does RPS have a documented policy procedure in place to ensure that requests for information or advice by families of seafarers which seafarers are at sea are dealt with promptly and sympathetically and no cost to the seafarer? Does the RPS have a documented policy procedure in place to verify that the labor conditions on ship where seafarers are placed are in conformity with applicable CBA concluded between ship owner and seafarers representative organization? Does the RPS service ensure that the
terms and conditions of employment of seafarers comply with applicable laws or regulation or CBA. RPS to ensure that all rights of seafarers are duly protected and that they enter into the valid contract of employment and sign article of agreement between RPS and employer or ship owner to be cited and should be valid. Does the RPS mention number, date of issue and validity of license in all of their advertisements published, and license number is mentioned in all its communications? Does the RPS service provider have a procedure to send the reminder to the director for its annual inspection 3 months before the due date? RPS एक्सपायर होने के 3 महीना पहले आपको एक इंटीमेशन भेजना है DGCP को. Are the monthly reports in Form 1 sent by 12th of every succeeding month in a manner specified by the DGCP? Has the RPS service provider sent Form 2 to DSCO or any other person authorized by DG in online mode or proper form of any death or injury to the seafarer within 48 hours of incident? Has the RPS service provider made a welfare fund contribution towards Seafarer Welfare Fund Society Mumbai on quarterly basis? Does the RPS ensure that contribution to SWFS Seamen Welfare Fund Society by Indian ship owners for every seafarer engaged by them on board Indian flag ships are made on a quarterly basis? देखिए ये अमाउंट है, ये तो सीफेयर को नहीं करना है, RPSL वाले के लिए है. It is ensured that a seafarer with whom an employment contract is entered into it placed on board the ship. Is there a grievance redressal mechanism available to enable complaints to be made by the seafarers against the RPSL against the ship owner? It is record maintained related to charges for travel documents, medical examinations, etc. collected from the seafarer. Is there a procedure for collection, storage, or processing seafarer personal data? Copy of employment contract of all seafarer available. Agreement MOU contract between RPS and private service there. As following records applicable related to maintained for a minimum retention period of 5 years. A record of claims consumption compensation made related to injury death of seafarer maintained. Does the RPSL ensure that all ships on which seafarers are recruited and placed or covered by the P&I insurance? Are there any complaints pending in respect to seafarer recruited? Is there any criminal or civil case registered pending any court in relation to MSRPS Rule 2016 as amended involving the recruitment and placement service? All records of claim of compensation made related to injury, death or seafarer maintained. Are following records applicable for 5 years? ठीक है. About does the RPS ensure that the ship which has different P&I insurance are they complaints pending in seafarer recruited? Is there any criminal civil course record of medical data relevant to employment maintained? Is there any documented procedure stating the RPSL shall provide a letter of intent which also indicates the name and address of owner RPS as given in Form 7 for managing their ships to enable hospitality crew obtain Indian CDC to work on cruise ship and or same is being implemented? ये 8 पेज का चेक लिस्ट है, जिस चेक लिस्ट के बारे में मैंने पढ़ा, और ये चेक लिस्ट जो है आपको कंप्लाई करना है अगर आपको RPSL लाइसेंस चाहिए. ओवरऑल कहने का बात ये है कि भाई साहब, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ऐसी कंपनी में ज्वाइन कीजिए जिनके पास वैलिड RPSL लाइसेंस है,
या DOC है, इंडियन ओनरशिप है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल, थैंक यू।